So what can I say about a person who has transformed herself from the academic world, being a teacher, to now becoming a wellness coach, someone who's trying to make India, as she says, Oshad Mukt Bharat. And what better day than the anniversary of our Republic Day to speak about this very, very important mission that she's embarking on to help us, to empower us, to be able to become better in a holistic manner. As she said, it's physical, mental, psychological, spiritual. And that journey is through acupressure. So, in this chat that I'm going to have with her, we are going to cover how she came into this world of acupressure, what is her passion, how it became her purpose, and then now it is the core of her business or entrepreneurial enterprise. So, a very, very brief introduction to her. Postgraduate in science, Bachelor of Education, clinical hypnotherapist from CHI, acupuncturist, auricular therapist, graphologist, and pranic healer. So it's quite a plateful. She has founded Healing Touch, the Wellness Center, and runs a personal chamber at Salt Lake, Kolkata, with 95% success rate. And for the last 18 years, she has been practicing acupressure, conducting several awareness camps, not only in Kolkata, but even abroad and nationwide, training thousands of therapists till date. And mission is to create a pills-free Bharat. So, Chanchal, it's my pleasure, my honor to have you here with me to explore how you came into this world and the impact that you are creating. That is evident over here, having your students and clients coming and joining our conversation. That itself is giving me an insight into your stature in your chosen profession and your chosen domain. Thank you so much, Mrs. Bose, for inviting me here. And thank you so much, every one of you, for joining again on a holiday evening. So आप लोग बोलोगे कि चंचल मैम की हैबिट ही हो गई है हमारी इवनिंग और खासकर हॉलीडेज की इवनिंग को लेने की. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोचती हूँ कि कोई यहाँ पर जुड़ेगा क्यों. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ बीइंग हियर. व्हाई वुड यू बी हियर. क्या मिलेगा आपको मेरे पास्ट को जानकर या मेरी स्टोरी को जानकर या पैशन टू प्रोफेशन या पैशन टू पर्पस को जानकर. व्हाट वुड बी द बेनिफिट. तो मैम बोस का एक क्वेश्चन था अभी जो उन्होंने बोला कि विल बी डिस्कसिंग सम पॉइंट्स टुडे एंड वन ऑफ द थिंग दैट आई वुड बी टेलिंग यू इज एक किसी शायर की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं. एंड इट सेज अगर आप किसी चीज को तहे दिल से चाहते हो तो सारी कयानातें उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती. यदि कुछ करने की इच्छा है तो सारी कयानात is there with you. Kayanat is nature. Whole of nature is there with you to fulfill your purpose. And it will take the effort of fulfilling your purpose. So my story actually begins like that only. And I wish and I hope कि अगर आज मेरी स्टोरी से या मेरी हिस्ट्री से आपके किसी में से एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ भी बदलाव हो, 5% या 10% भी बदलाव आ जाए, देन आज का हमारा 1 घंटा जो है वो वर्थ अटेंडिंग हो जाएगा. So the story actually goes back to 2002 and it was after my class 12 when I was preparing for my medical examination. So medical exam के लिए prepare करते करते कहीं से उड़ता हुआ एक पर्चा मेरे हाथ में आया था which said that there is 3 days workshop of, जैसे आप लोगों को मिलता रहता है पर्चा, उसी तरीके से कोई पर्चा उड़ता हुआ आया and it was saying कि there is a 3 days basic workshop. If you want to attend, you attend it. उस समय 500 रुपए फीस देकर
3 दिन का कोर्स अटेंड किया था एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द कोर्स. 2 other friends of mine were there with me. They were also preparing for the joint entrance examination and different other medical examinations. So we just went there for fun. It was a fun class for us. And after attending the class, there was a scope of attending further classes of advanced course and then super advanced course and then a conference. So these consecutive classes gave me an insight that there's something beyond body, there's something beyond health. So these points are very, very important for me, but still, I never thought that this would be my profession. So one of my friend, a distant friend who was there in acupressure since long time, she said, अरे चंचल आगे करो, पता नहीं कब तुम इसको अपना प्रोफेशन बनाओगे. बिलीव मी, उस दिन मैंने उसे बहुत गालियां दी थी, क्योंकि मैंने सोचा मन मन में कि कहाँ मैं मेडिकल करने जा रही हूँ, कहाँ बोल रही है कि इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी. कभी भी नहीं होगा, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा. And I'll tell you one more thing, you never know what nature wants out of you. आप आज जहां हो या जो कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता कि भविष्य में प्रकृति आपसे, नेचर आपसे क्या कराना चाहती है एंड किस तरीके से कराना चाहती है. सो फॉर सम रीजंस, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रीजन से, फॉर दैट रीजन पूरा रास्ता ही चेंज हो गया. मेडिकल से आई वेंट इनटू ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन इनटू बीएड. सो डॉक्टर बनने वाली चंचल जो थी, अब वो एक स्कूल की टीचर बन गई. सो स्कूल की जर्नी भी शुरू हुई फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल एंड देन अशोका हॉल ग्रुप ऑफ स्कूल वेयर आई मेट मिसेस बोस. So that was a beautiful part of my life because it extended for almost 6 to 7 years. 6-7 साल तक टीचिंग का प्रोफेशन था, where I was teaching हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाना. बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा प्यार मिला और बहुत कुछ सीखने मिला मैम बोस जैसे सीनियर टीचर्स से. डांट भी पड़ती थी लेकिन सीखने भी मिलता था. एंड उसी समय में समझ लो एक और यू टर्न था लाइफ का. व्हेन आफ्टर गेटिंग मैरिड आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड. सो व्हेन माय फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न, आई हैव 2 daughters. So after my first daughter was born, immediately after that, I was suggested by many people around me कि ये teaching का profession अब छोड़ दो, because my teaching profession was unlike any other school का profession, because मुझे सुबह 8-9 बजे निकलना होता था और रात को आते आते 8-9 बज जाते थे. It was extended time because I was taking 2 shifts, afternoon and evening, both the classes for class 11 and 12. So too hectic it was, and so many people suggested teaching अब छोड़ दो, बच्चे को कौन देखेगा. Easier said than done, क्योंकि ज्ञान देना बड़ा इजी है, बट उसे जब उतारने का मौका आता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो अगर मैं टीचिंग छोड़ दूंगी तो मैं करूंगी क्या. इतनी पढ़ाई किस लिए की, पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया, बीएड की डिग्री क्यों ली, स्कूल्स में क्यों पढ़ाया, अब बच्चा हो गया, अब छोड़ दूंगी, करूंगी क्या. ये सोच सोच कर 3 महीने मैंने बहुत आंसू बहाए. सो a suggestion cropped up from family only कि जब एक्यूप्रेशर सीखा है और इतने पैशनेटली उसको करती हो, so why don't you change it into your profession. फर्स्ट टाइम सोचा इस तरीके से कि एक्यूप्रेशर को प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, बिकॉज जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने कभी भी इसे प्रोफेशनली नहीं किया. जिन गुरुओं से मैंने सीखा है, जिनसे आगे बढ़ी हूँ, उन्होंने हमेशा इसे सेवा की तरह दी है. So it was a new thought to me again. और वहीं पर जिनके लिए मैं करती रही हूँ, जो पेशेंट्स के ऊपर मैंने हमेशा इसे अप्लाई किया है, उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स ने कहा कि why don't you open a chamber. So this opening a chamber was new concept for me, but it was again the fulfillment of the statement और the शायरी कि आप जब किसी चीज को तहे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात ही उसे आपसे मिलाने में, उसे मिलाने में कोशिश में जुट जाती है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा, अरे चेंबर, दैट मीन्स आई विल बी अ डॉक्टर. Though I cannot write the degree of doctor in front of my name, but yes, I'll be treating patients. So this thought was really beautiful for me, and it was motivating as well because लग रहा था कि हाँ कुछ कर सकती हूँ इस तरीके से. लेकिन जब शुरू किया, then I was standing alone. पीछे फैमिली का सपोर्ट 100% था, लेकिन अगर कहा जाए कि करूंगी क्या, कैसे करूंगी, कैसे चेंबर होगा, कैसे पेशेंट्स को बुलाऊंगी, कुछ भी नहीं पता था. एंड देन इट इज सेड ना कि मैं अकेला ही चला था
जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। सो ठीक इसी तरीके से मदर का सपोर्ट रहा, मदर इन लॉ का सपोर्ट रहा, हस्बैंड का सपोर्ट रहा, सिस्टर्स का सपोर्ट रहा, सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया और कहा कि नहीं कर लोगी। और फिर खुद को भी लगा लॉस तो कुछ नहीं है, कोशिश कर सकती हूँ, और करती गई। 2012 में माय डॉटर वाज बोर्न एंड आज 2021 है। उस समय जस्ट शुरुआत की थी, कुछ साल के अंदर में एक प्रॉपर चेम्बर कर लिया, कुछ बहुत अच्छे साथी जुड़ गए, कुछ बहुत अच्छी टीम बन गई, कुछ बहुत अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, और आज हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे लिए समय कम पड़ रहा है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक एक मोमेंट इज सो वेरी प्रीशियस। सो जब मैम बोस का कॉल आया कि कुछ बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई ऑल्सो थॉट कि हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और हो सकता है जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा रही हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लकी लोग होंगे या बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो जो करना चाहते थे उसी में ही अपना प्रोफेशन बनाया हो। और बहुत सारे अभी भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, प्रोफेशनली कुछ और कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और करने की इच्छा हमेशा रही है। सो 3 इडियट्स में जिस तरीके से दिखाया था कि जो आप करना चाहते हो यदि उसी को ही अपना प्रोफेशन बना लो, देन देयर इज नो, यू विल नॉट थिंक कि संडे के बाद मंडे आ गया, अरे ऑफिस जाना। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कि अरे संडे खत्म हुआ, चलो वापस अपने काम में लगना है और उसी में करना है जो जिसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। सो इट इज नेवर अ बर्डन फॉर मी, दिस इज व्हाट आई लव टू डू, एंड treating someone through a method where you are not creating any ailment, any other ailment in the body, there is no side effect in the body, एंड जहां पर आपको सेवा भी मिलती है, अध्यात्म भी मिलता है, जिसमें आपका प्रोफेशनली भी आप काम कर सकते हो, जिसमें आप खुद को जान सकते हो, व्हाट एल्स वुड यू वांट इन लाइफ। सो दिस इज अ कंप्लीट थिंग फॉर मी, जहां पर मैं एवरी मोमेंट आई एंजॉय एंड एवरी मोमेंट आई लर्न। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी, बट मेनी मोर things to learn in life. So, Chanchal, you have found your mojo. You know, this is a word. When your passion, your purpose, and your business idea, they come together in a very powerful combination. So then every minute drives you intensely to give of your best, to contribute to the world, to impact the maximum lives and make a difference in a big way. I'm so proud to see you where you have reached through your own effort. And this is what, as coaches, we say you have to make a leap of faith. You made that leap of faith without knowing where the road would take you, but it has taken you to fulfillment, to happiness, to success, to prosperity, and most important, the blessings of all the people whom you are impacting with your healing touch. So, tell us something about your center, your healing touch. What kind of work does it do? And you were also telling me about how you have now reached a place where you can give degrees, academic degrees or diplomas. Tell us about that side of your business. So I'm sure that will inspire many others to take up this as a profession. Healing touch started with the word healing touch, but now it is the healing touch, the wellness center. So this center works not only in the platform of teaching, but also for treatment and research. So we are looking forward to many volunteers with whom we can work together to reach different societies, different NGOs, different schools, and we can spread this knowledge to the whole of the world. तो जो अभी तक औषध मुक्त भारत के लिए हम कर रहे थे, मुझे लगता है अब वसुधैव कुटुंबकम अगर कहें तो दिस इज फॉर औषध मुक्त वर्ल्ड. सो हीलिंग टच, यस, औषध मुक्त विश्व. सो हीलिंग टच जो है एक सेंटर है कोलकाता में, हमारे सॉल्ट लेक एरिया में सेंटर है जो ट्रीटमेंट भी कर रहा है एंड टीचिंग भी दे रहा है. ट्रीटमेंट के तौर पे वी ट्रीट पेशेंट्स थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ एक्यूप्रेशर ओनली. सो दिस एक्यूप्रेशर इंक्लूड सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी,
And along with that, we also treat patients through moxibustion, cupping, acupuncture. All these are different techniques we use for the treatment. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है जिसमें आप लोगों को अगर कभी नहीं पता हो कि एक्यूप्रेशर है क्या, सो आपने रामदेव जी के जो पॉइंट्स देखे होंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रेशर दीजिए, यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ प्रेशर, सो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर ओनली. So similarly, we work more intensely on the points through different other modalities, seed color, as I said, magnet, needles. So it's very, very effective. And the best part is when we are treating a patient, what is the difference between acupressure, acupuncture, or any other modality? Why should one come for acupressure and not go for any modern medicine way? The reason being, when you're treating someone through acupressure, we are using own energy to heal the self. आपकी खुद की ही एनर्जी को यूज करके जब हम आपकी ही प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, then that is the principle behind acupressure or acupuncture, and that is the reason there is no side effect of the therapy. तो इसमें रिजल्ट ऐसा जो मिथ रही है कि बहुत समय लगता है या बहुत पेनफुल होता है, ऑल दीज आर, अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई, क्योंकि अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत फास्ट है, because the points are also the points have been reduced. These are minimum points we use. It's less painful, very less painful. अगर जो पेशेंट्स पंक्चर कराने के लिए यदि आते हैं और बोलते हैं कि मैम पंक्चर तो कराने आ गए लेकिन हमें डर लगता है कि आप जब पंक्चर करोगे तो बहुत दर्द होगा, then I say कि if the patient is lady, she is a female, तो अगर आपने कभी आईब्रोज बनवाई है या वैक्सिंग कराया है तो उससे कम दर्द आपके एक्यूपंक्चर में. अगर बच्चा है देन आई विल से कि मॉस्किटो बाइट में जितनी जलन या दर्द होती है उससे कम दर्द होता है नीडलिंग कराने में. सो इफ द पर्सन इज करेक्ट, इफ द पर्सन नोज द टेक्निक हाउ टू डू इट, देन इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल, बट on the contrary it is highly effective. So there are so many diseases for which the patients have gone to different doctors, different testings, they have spent so much of money their money. लेकिन एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में जब आते हैं तो हमारी थ्योरी बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज वी डोंट सी डिजीज एज वन, वी डोंट ट्रीट अ डिजीज, वी ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है और उसके सर का दर्द हमें ठीक करना है, तो हम अनलाइक एनी अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट जहां पर सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए सर दर्द की गोली लेते हैं, हम सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए वी फाइंड आउट द रूट कॉज. व्हाट इज द कॉज फॉर विच यू आर हैविंग द हेडेक? इज इट बिकॉज ऑफ टेंशन? इज इट बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस? इज इट बिकॉज ऑफ सर्वाइकल इशू? व्हाट इज द कॉज? And whatever the cause is, accordingly we treat the root cause. If it is because of acidity, we treat acidity. If it is because of cervical, we treat cervical pain. If it is because of stress and tension, we treat stress and tension. So it's a holistic science. इसमें ऐसा नहीं कि we are treating only the body. We are treating the mind and spirit as well. कितने सारे पेशेंट में ट्रीटमेंट जो होता है it is on emotional level. I'll give you an example. There's a lady who came to me for treatment of infertility. She came to me. She said, I want to get my infertility treated. I said, how do you know it is infertility? She said, because I'm unable to get pregnant for the second time. I said, if you already have a first child who was almost 7 to 8 years old, 7-8 साल की एक लड़की थी, and second time करे, she said, I'm unable to conceive for the second time. So अगर second time आप कर रहे हो, then it is definitely not a case of infertility. But she said कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि अगर नहीं हो रहा है, then you will have to go for IVF and other methods. So after doing the diagnosis, after talking to her, and after doing a lot of work on her, what we got to know is it was a lot of stress and pent up emotions inside, which was not letting the ovulation and hormonal changes taking place properly. बहुत सारी पास्ट स्टोरीज, बहुत सारे मैटरनल एंड इन-लॉज के संग घर का प्रेशर फॉर द सेकेंड चाइल्ड, फॉर द बॉय चाइल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that was not letting the girl conceive. So when we did the treatment, now you may think that it was only the talking. No, it was also acupressure and acupuncture which we did on the girl. She started crying. And she cried almost for 15 to 20 minutes, and she said, I never thought कि मैं आपके पास आकर इस तरीके से रोऊंगी, because what I feel is I'm a very strong lady. So after crying for 20 minutes, she said, I'm feeling so very light after so many months.
कि मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत अच्छी से सोऊंगी, एंड शी केम अगेन, शी वाज अ रेगुलर पेशेंट एट आवर चेंबर देन। बट मैंने ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है कि एक्यूप्रेशर इज नॉट ट्रीटिंग द सिम्टम ऑफ द डिजीज, इट इज ट्रीटिंग द डिजीज फ्रॉम द रूट। So I'm totally in favor of this therapy. I'm not मैं किसी भी और थेरेपी को नीचा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये हमने प्रॉमिस किया है अपने गुरु को कि किसी और को नीचा करके अपने आप को नहीं उठाना है। बट डेफिनेटली आई कैन स्पीक फॉर, आई कैन वाउच फॉर माई थेरेपी, दिस थेरेपी इज माई थेरेपी नाउ। सो अपनी थेरेपी के लिए बोल सकती हूँ कि जब हम ट्रीट करते हैं तो वी गिव आवर 100% फॉर द पेशेंट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। Second part of our chamber, the healing touches, the training part. For the training part, we are training people all over the world. मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ सिर्फ कोलकाता में या डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक अभी अर्चना जी जैसे इंडोनेशिया जकार्ता से जुड़ी हुई है। शी इज आल्सो देयर विद अस राइट नाउ। शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क विद अस, बहुत सारी तरीके से उन्होंने हेल्प की है और बहुत सारा काम करने में हमें मदद की है। तो बहुत लोग हमसे वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, डिफरेंट कंट्री से, वेदर इट इज यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, जकार्ता है, बहुत जगह से लोग जुड़े हैं। और इन ट्रेनिंग्स में वी हैव डिफरेंट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज अप टू 3 year 4 year, but not necessarily everyone has to complete 3 year of degree and then get the knowledge. So these courses are divided into 6 months का courses. This is an information of for every one of you, those who are here, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस थेरेपी को, जिसको मैं बोल सकती हूँ पेंडोरास बॉक्स की तरह, कि अगर आपने खोल दिया तो जैसे कि क्या निकल जाएगा इसके अंदर से आपको नहीं पता है, तो ठीक उसी तरीके से इस थेरेपी में कितना कुछ छुपा हुआ है। शायद मेरे लिए ये 15-20 मिनट या आधा घंटा बहुत छोटा समय कि मैं आपको समझा सकूं कि इसके अंदर क्या है। सो फॉर दैट रीजन इसे छोटे छोटे कोर्सेज में डिवाइड किया है। 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं। each 6 month course is 1 semester. So after 1 semester, you have an option whether you want to go for the next semester or not. And each semester is independent of each other. So अगर आपने skip भी कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ miss कर दिया. So एक semester करने के बाद you get a certificate. After certification, you have the option of moving ahead to the next semester. And likewise, you can move on to other semesters. एक के बाद एक आप आगे आगे करते जा सकते हो, सीखते जा सकते हो, because इसमें जो knowledge है वो आप every time you will feel that एक पर्दा आपकी आंखों के आगे से हट गया और आपको एक नई बात पता चल गई। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज अ थेरेपी वेयर वी आर नॉट ओनली ट्रीटिंग बट ऑल्सो डायग्नोसिंग। सो जिन्होंने ट्रीटमेंट मेरा देखा है कि किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि कान की पिक्चर हम मंगाते हैं। सो यू गिव मी द पिक्चर ऑफ ईयर, आप अपने कान की पिक्चर मुझे दे दो और मैं आपको बता दूंगी। आपको नहीं बताना है, मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपके शरीर में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उन बीमारियों का नाम मैं बताऊंगी आपको। और इसी तरीके से जीभ को देखकर, आईज को देखकर, फेस को देखकर, कॉम्प्लेक्शन को देखकर, दिस इज नॉट फेस जिसको फेस रीडिंग बोलते हैं या बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेयर इट्स अ डीप साइंस, जिसमें सिर्फ टंग को देखकर आप क्या क्या पता कर सकते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। टंग को देखकर इसके ऊपर वी हैव अ बुक, ऑलमोस्ट 200-250 पेज की एक किताब है, एंड इट्स अ कंप्लीट साइंस। जैसे नाड़ी को देखकर वैद्य बताते थे कि किस क्या क्या बीमारियां पेशेंट के अंदर हो सकती हैं, उसी प्रकार से आपकी पूरी बॉडी को देखकर, एक एक पार्ट को देखकर वी कैन डायग्नोस। सो आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। अ वेरी सीनियर थेरेपिस्ट ऑफ आवर्स, she was into acupressure since long time, and she had a blackish patch on the forehead. So this blackish patch on the forehead, whole of it, I'm not talking about sunburn, I'm talking about darker zone here. So this darker zone in acupressure says that it may be because of some heart ailment related to heart. And it also says which different part of heart is involved, kaun sa different part involved. So when she got to know, she got her ECG and etc, all the heart ka testing done, and she got to know कि उसके heart में कोई problem नहीं। So she came to the center and she said कि दीदी देखिए इसमें सब बेकार है, हमारी थेरेपी में ने बोला है कि यहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम है, देखिए मैंने तो सब कुछ करा लिया इसको देखकर, बट इसमें कुछ नहीं आया। And you'll not believe, after 5 years she was diagnosed with bicuspid valve ailment, and
it was the one which was diagnosed according to acupressure. So as pranic healing or Reiki says, whenever an ailment affects a person, it affects the energy of the person first and then the body. जो हमें दिखाई देता है, जो आप बैठे हैं यहाँ पर, मीनाक्षी जी हैं या नमिता जी हैं या राजीव जी हैं या गीतू जी हैं, ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ शरीर है, बट इसके अंदर और इसके बाहर जो एनर्जी है दैट इज इमेंस. इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है वो किसी को दिखती नहीं है. आप में से कोई भी देख सकता है इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं देख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है. अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती तो आपका पंखा कैसे चलता है या आपकी बत्ती कैसे जलती? ठीक उसी तरीके से आज आपके अंदर जो फ्लो कर रहा है, आपके अंदर कुछ तो ऐसा बह रहा होगा या कुछ तो ऐसा एग्जिस्ट करता होगा विच इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन यू एंड योर डेड बॉडी. आपके और आपके डेड बॉडी के बीच में अंतर किस चीज का है? एक ही चीज का है, जिसे आप या तो आत्मा कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए या प्राण कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए या ची कह लीजिए. आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट है कुछ ऐसा जो इनविजिबल. सो दैट इनविजिबल गेट्स अफेक्टेड फर्स्ट every time whenever there is an ailment in the body, and there are some symptoms जो हमारी बॉडी दिखाती है. हमारी बॉडी बताती है कि आपके अंदर ये हो रहा है और ये होने वाला है. only thing is we are unable to read those symptoms. हमें वो पढ़ने ही नहीं आते. अगर हमें जानवरों की भाषा पता होती तो शायद हम भी उनके संग कम्युनिकेट कर पाते. ठीक इसी तरीके से अगर हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी हमें क्या बताना चाहती है, तो we will also understand that this is what is happening in the body. And ये सारा ज्ञान जो है ना, ये हमारे 5000 साल पुरानी इस थेरेपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है. Because this is also a part of Ayurveda, this is also a part of चरक संहिता और सुश्रुत संहिता. More than thousands of years ago. आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, अगर उनको हम साइड कर दें, और जो एकदम नए हैं यहाँ पर, जिनके लिए ये थेरेपी बिल्कुल नई साउंड कर रही है, आप मुझे बताओ सिंदूर क्यों लगाते हैं? अगर फीमेल की बात करते हैं तो सिंदूर क्यों लगाते हैं, या बिंदी क्यों लगाते हैं, या गले में क्यों पहनते हैं? इनके पीछे क्या कारण रहा होगा? या हर फीमेल के कान में छेद करने का कारण क्या रहा होगा? या हर फीमेल के नाक में छेद करने का कारण क्या रहा होगा? आप ना कराओ वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इतने लोगों को मास में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं? The reason is it's color therapy. It is acupuncture, which is performed on so many females or males all over. जब यहाँ पर लाल रंग की बिंदी लगाते हैं, that red color is activating one of your hormonal gland. ये बात अलग है कि हमें इसके पीछे का रीजन नहीं बताया गया, and that is why we are now applying stickers. अगर एक्टिवेट करना है तो पुराने समय में चले जाओ, देखो वहां पर कुमकुम या सिंदूर लगाते थे. आज वहां पर हम स्टिकर लगा रहे हैं, उस स्टिकर का कोई यूज नहीं है, इट इज यूजलेस. बट इफ यू अप्लाई कलर ऑन इट, if you are applying red color activates the hormonal gland. There are major glands here on the head. So आपने पूरा उस जोन को रेड कलर कर दिया. आप ये now you call it vermilion, या you call it सिंदूर, लाल सिंदूर. अब आप उसको शौकिया तौर पर लोग पिंक और न जाने किस किस कलर से करते हैं, बट आइडियली इट शुड बी either orange or red, because you are stimulating that area. Now what is that? That is nothing but activating a zone, a pressure point through color. That is nothing but color therapy. कान में छेद क्यों कर लिया? बिकॉज जिन्होंने अभी मेरे संग कुछ दिन पहले ही ऑरिक्यूलर थेरेपी की क्लास हुई थी. ऑरिक्यूलर मीन्स ईयर. सो कान में अगर आप देखो तो आपको उल्टा लटका हुआ एक वुम, एक एम्ब्रायो का इमेज दिखेगा. इफ यू इमेजिन, विजुअलाइज करो तो. सो उस उल्टा लटके हुए एम्ब्रायो पर अगर देखो तो योर ईयर लोब इज नथिंग बट द हेड रीजन, and you're penetrating the center of the head. That means there must be some very important area on the head region, which may be thalamus or hypothalamus, या nucleus of the brain, जिसको आपने puncture कर दिया permanently, so that it is always stimulated and whatever needs to come out, जो भी secretion वहां से होना था वो होता रहे. कब आप बोलोगे ये मेल्स को जरूरत नहीं है क्या? नहीं थी, इसलिए फीमेल्स ने किया. क्योंकि फीमेल्स को what she has to go through every month and all through the life is very much different from a male. So फीमेल्स में ये हार्मोन्स ठीक से सिक्रीट होते रहे, उसके हार्मोन्स की जो साइकिल है, जो ग्राफ है, वो ठीक से चलता रहे,
That is why she was given more power. दुर्गा को ऐसे ही इतने हाथ नहीं मिल गए, इतने अस्त्र इसलिए नहीं मिल गए क्योंकि वो फीमेल है, इसलिए मिले हैं बिकॉज शी हैज टू डू समथिंग डिफरेंट एंड एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर. सो फीमेल के अंदर उसका पावर बना रहे और ज्यादा रहे, इसलिए कुछ उसे एक्स्ट्रा चीजें दी गई. गले में पहनाई हुई माला या हाथों पे पहना हुआ बैंगल या पैर में पहनी हुई पाजेब उसके लिए जंजीर नहीं है. ये हमें बताया नहीं गया और हमने उसे कुछ और तरीके से सोच लिया, ये बात अलग है. When you are wearing a bangle, you are actually pressing the X point. All these are X, we call it X points because these points are marvelous points for reproductive area. Similarly, you have X points, yes. So you have X points in the ankle. So आप उन एरिया को वहां पर स्टिमुलेट करते रहो, सारा दिन आप प्रेशर नहीं दोगे, so you are wearing bangle. And that is why gold bangle in the arm and foot में आपने पाजे पहनी जो चांदी की थी. Chandi drains the extra energy out and gold invites the positive energy from cosmos. So there are reasons behind everything. Only thing is we need to know. How do we know? Through these training camps. So ये training camps जो हैं, जो हमारे certificate, diploma, degree courses तक जाते हैं, ये सबके लिए open है. एज कोई उसके लिए बार नहीं है, किसी भी उम्र के लोग उसको सीख सकते हैं. उसके लिए लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो योर एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज किसी भी क्लास 10 क्यों मैं कहती हूँ, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सिखाने का काम हमारे. सो दीज ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट एंड सोशल सर्विस, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ हीलिंग टच होंगे. सो हीलिंग टच कई तरीके से काम कर रहा है और वो चाहता है कि ये हर व्यक्ति तक और घर के हर एक, कम से कम हर फैमिली से एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचे, सो दैट जिन बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हो, जिन डायग्नोसिस को आप पहले से कर सकते हो, जिन मेडिसिन या पिल्स को आप अवॉइड कर सकते हो. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीपैथी, बट अगर आप 10 दवाइयां ले रहे हैं और उसमें एक दवाई एंटासिड है, देन आई स्ट्रांगली से कि आप उस एंटासिड को कम से कम बंद कर सकते हो आप अपने खुद के ट्रीटमेंट्स. व्हाई विल यू टेक 10 medicines when you can avoid 6 of them? Take 4. I'm not against those 4 medicines which are essential for you, but I'm against those 6 medicines जो आपने जबरदस्ती अपने लिए तैयार कर ली. So this is healing touch work that we are doing and we'll be continuing with that because there's a lot of work to do and we need more helping hands and volunteers for those work. I salute you, Chanchal. And you have given us such a beautiful insight into all our customs and rituals, you know, that they have a scientific significance. They have a reason. But it was not possible for our elders to explain the reason, especially, you know, to the rural people. It was informal education. The everyone married sindoor, you know, especially in Bengal, हम सब लाल सिंदूर पहनते हैं, आगे एक लाल सिंदूर की बिंदी हम पहनते थे. तो इसकी जो significance है, we never knew that. But this is infinity, na? Bindu, zero. Yes. If you go back to the past, Aryabhat, Bindu, the zero, the concept comes from here, infinity. So women, we hold infinity in our hands. We are so powerful. Unfortunately, we feel very low. We feel inferior. Because in a patriarchal society, you are made to feel inferior. But if you believe that you are Shakti incarnate, nothing should stop you. Because Durga has so many aspects of valor, and we are Durga. We always remember that we are Durga. So never think of yourself as low. Achha, I have a very interesting question, Chanchal. They say charity begins at home. Does your family use this method for any kind of ailment or any kind of treatment themselves? This question is very interesting. The reason being, family for me is not only the people who are staying with me or I'm staying with them at home. Family for me means whomever I know is a family of mine. So maybe extended family or the relatives. So this journey, especially I'm very interested in answering this question for the reason कि बहुत सारे students मुझे बोलते हैं कि मैम सीख तो लिया बट घर में कोई विश्वास नहीं करता है, तो किसके ऊपर हम अप्लाई करें, और पेशेंट्स आने में शायद अभी समय लगेगा. सो हाउ टू डू? I'll tell you
कि मुझे बहुत समय लगा था, जब मेरे घर वाले तो बड़े शौक से वो कराते हैं, मुझे मेरे बच्चे, उन्हें बहुत सारी चीजें पता भी हैं कि किसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में इट वाज अ लॉन्ग, फॉर मी इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि किसी को भी विश्वास दिलाने से पहले उसके ऊपर करना पड़ेगा, एंड करने से पहले उसे महसूस करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं करवाना चाहते। सो इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट आज मैं कहूंगी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू नेचर, कि उसमें से 90% लोग जो हैं वो आज इस थेरेपी को जानते भी हैं, मानते भी हैं और करते भी हैं। उनमें से एक एग्जांपल मैं लूंगी, वन ऑफ माय वेरी क्लोज डिस्टेंट रिलेटिव ओनली, बट सिस्टर की तरह मुझे लगती हैं वो। सो शी नेवर यूज्ड टू बिलीव इन दिस थेरेपी। एक दिन रात को उनके बेटे का फोन आया और कहा कि दीदी आप मुझे बताओ, ही यूज्ड टू कॉल मी दीदी, सो दीदी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मम्मी का ब्लड प्रेशर जो है इट इज गोइंग 190 एंड 110। सो आई न्यू कि शी डज नॉट बिलीव इन एक्यूप्रेशर। सो मैंने उसे बोला कि आप एक काम करो, आप सिर्फ अंगूठे पर इस एरिया पर खूब प्रेशर दो। He said, for how long? I said, कि you keep on giving pressure for next 4 to 5 minutes. I'll call you after 5 minutes. Let me know what is happening. Now this is for everyone. Whenever this type of scenario happens with anyone, अंगूठे पर नाखून के ठीक नीचे का जो phalange है, just below the nail, this area belongs to back of the head. So this is your medulla and pons area. So, and medulla and pons area controls many of the vital activities like your breathing, respiration, vomiting, swallowing, your sleep, even your blood pressure. So अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ आपने यहाँ पर प्रेशर देना शुरू कर दिया, तो भी आप बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज को बैलेंस कर देंगे। आप ऐसा मत समझो कि हमने ज्यादा दबा दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, या कम दबा दिया तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ इट। आप सिंपल है, आप इस एरिया को अगर आपने दबाना शुरू किया, एंड इफ इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा शरीर के अंदर में। सो आफ्टर 4-5 minutes व्हेन आई कॉल्ड अप, ही सेड कि हाँ दीदी, अब वो 160 एंड 100 पर है, बट है 160 अभी भी। देन आई सेड कि ओके, नाउ यू अप्लाई ब्लू कलर हियर एंड पुट अ मेथी स्ट्रिप। सो यहाँ पर इसी एरिया पर ओनली स्केच पेन से, नॉर्मल स्केच पेन से ब्लू कलर कर दिया होल ऑफ द एरिया, एंड उसके ऊपर एक मेथी की पट्टी बांधी, एंड आई सेड आफ्टर अप्लाइंग इट ऑन बोथ द थंब, कीप ऑन प्रेसिंग इट फॉर 4-5 minutes मोर, आई कॉल यू अगेन। And after that, when I called him up after 3-4 minutes, he said कि now it is 140/95. So it was, that means it has come down. और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद वो भी आई, अपनी पोती को भी लेकर आई और अपनी बहू को भी लेके आई, एंड शी इज अ रेगुलर पेशेंट विद मी नाउ। और उनकी जो बहू है नाउ, शी इज इन डिफरेंट कंट्री, लेकिन वहां से भी वो कोऑर्डिनेट करती रहती हैं, सीखती रहती हैं, जानती रहती हैं कि इस प्रॉब्लम का मैं कैसे ट्रीटमेंट करूंगी। सो इट सी, आपका पेशेंस और आपका प्रेजर्वेंस काम आता है, आपकी जो मेहनत है वो काम आती है। उसके लिए बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें, लेकिन उसको आप ज्ञान की तरह मत समझो कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, बट दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। आप अपना काम करो और रिजल्ट आपको डेफिनेटली अपने आप ही मिलेगा। सो आप फैमिली के ऊपर हो या किसी के भी ऊपर हो, आप उसे करते जाओ, एंड वन डे एवरीवन वुड बी विद यू। सो सेम थिंग हैज हैपेंड विद मी नाउ। मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं फैमिली में जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जिनकी बहुत सारे मेडिसिन चलती थी, और यहाँ पर शायद अभी भी हमारे ग्रुप में भी बहुत फैमिली मेंबर्स ऐसे जुड़े हुए होंगे जिन्होंने इसे बहुत महसूस किया है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ। Excellent, Chanchal. I'm sure you have inspired a lot of people here who are not in your world yet of the value that they can get, not only for themselves, but their near and dear ones, because medical treatment today has become so expensive, going to a hospital and paying the consultation fees, etc. So, ये बहुत एक अपनी जो indigenous हम बोलते हैं of the country, ऐसी एक सिस्टम है, प्रोसेस है, that you are now owning and making it your mission. Chanchal, what is the road ahead for you? Where do you see yourself 5 years from today in your mission? I see my life to be too short for this journey. So after 5 years, if I say that, then I see
अगेन कारवां ये जो है ये बढ़ता जाए, ये जो 5 या 10 लोगों की टीम है ये 500 और 5000 तक हो जाए, and we reach each and every home where at least one person from each family knows the therapy and they can do it for themselves. So we want the healing touch to grow definitely and reach to each and every house. So how are you taking this message? What are the ways, and apart from social media, is there any other way for you to take this message to different parts Yes, of so yes, the so for world? this purpose, we have started with a new project. It's a huge project, and we would be inviting many other people. And यहाँ से भी मैं बहुतों को ये message देना चाहती हूँ कि we are reaching out to different schools now because we feel school is the base for any country or the whole world. So जहाँ पर हम बच्चों को train करते हैं या teachers को या mentors को या उनके parents को train करते हैं, we have different type of programs. Some for the school children, some for the mentors or teachers, faculty members, and for the parents. अगर school initial stage पर है, primary level का है, then we invite the parents. If it is at class 5 or 6 or 7 or 8, then we invite the students. And along with the students, we also invite the faculty members. So we reach out to different schools and we train them. जिस तरीके से स्कूल में पीटी की क्लास होती है या म्यूजिक की क्लास होती है या स्विमिंग की क्लास होती है या डांस की क्लास होती है या कोई भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की होती है, आई विल से एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू वुड बी विद मी कि इन 2 सालों में हमें ये तो पता चल गया कि हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोला जाता है. सो माय डॉटर गेव मी अ मैसेज yesterday only. She because 23rd of January was our healing touch birthday. So she made a card and she wrote on it, health is more than wealth. So I was so much with her कि it's truly true कि health को अगर आप रुपए देकर भी खरीदना चाहो तो भी आप नहीं खरीद सकते हो. अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ रुपए ले लो और मेरे लिए आप बीमार पड़ जाओ तो भी आप 1 करोड़ नहीं लोगे. So health is definitely very very important in every one of our life, and we would like every child to be inculcated with this knowledge कि आपको छोटी छोटी बातें कम से कम पता हो कि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो वो रोकर ये ना बोले कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. उसे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो. छोटी प्रॉब्लम्स हैं या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को अगर आपने डायग्नोस्टिक से कर लिया तो आप सिंपल कलर लगा कर, बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, बच्चे को अगर पता है कि मैं अगर यहाँ दबाऊंगा मेरा सर का दर्द कम हो जाएगा. So instead of panicking or instead of crying or instead of reaching the for the help, बच्चा को अपने आप पता है कि मैं कुछ प्रेशर पॉइंट्स अपने आप जानूं कि जिसके कारण मैं अपने आप को ठीक कर सकूं. फॉर एग्जांपल अगर बच्चा गिर गया फील्ड में और उसे ब्लीडिंग हो रही है एंड द चाइल्ड नोज आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड, आई एम गिविंग यू द नेम ऑफ द पॉइंट आल्सो. For example, SP6 is a wonderful point to stop bleeding anywhere in the body. So if it is unnatural bleeding, कहीं से bleeding हो रही है, कट हो गया, तो बच्चे को पता है कि अगर मैं ये प्रेशर पॉइंट दबा लूंगा तो यहाँ से मेरी ब्लीडिंग कम हो जाएगी. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन कराटे किड. कराटे किड में अगर आपने देखा हो तो लास्ट की तरफ जब उसको चोट लग जाती है, सो ही वाज गिवन सम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विद सम धूप पत्ती की तरह दिखने वाला एंड कप्स की तरह दिखने वाला सम ट्रीटमेंट वाज गिवन. इट वाज नथिंग बट एक्यूप्रेशर. सो अगर बच्चे को पता है खुद को कि मेरे पैर में इस जगह पर SP6 आता है, इफ आई प्रेस इट टाइटली और इफ द फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड प्रेसेस द पॉइंट टाइटली तो वहां की ब्लीडिंग को तुरंत रोक सकता है. अगर ये बेसिक नॉलेज भी हम स्टूडेंट्स को दे दें देन डेफिनेटली इट विल रीच टू ईच एंड एवरी हाउस. सो यही मोटो है कि हर बच्चे को हम सिखाएं, स्कूल्स तक रीच करें, क्योंकि स्कूल्स अगर हमें मदद करते हैं तो हम रेडी हैं स्कूल्स को ये प्रोग्राम्स सिखाने के लिए कि आप अपने करिकुलम में इसको ऐड करो. और जो हमारा मोटो है औषध मुक्त विश्व, उसमें हमें मदद मिलेगी. बिल्कुल. And I think anything has to start at the grassroots level, and the children are the grassroots level of our country. They are going to be the citizens of tomorrow, and if they adopt, own, and use our indigenous system of medicine, I think our country will also thrive, and the health of our people will also be much, much better than they are today when they swallow about 10, 12 different pills. So you are doing a great service, not only to the individuals but to the nation. And especially आपकी जो ये प्रोजेक्ट जो चंचल तुम बोल रहे थे ना मुझको,
that बच्चों को सिखाओ, बच्चों टीचर्स को सिखाओ, बिकॉज हम स्कूल में एज अ टीचर मैंने देखी हूँ ना, अगर कोई सडनली कुछ इमरजेंसी हो देन वी ऑल पैनिक, हम क्या करेंगे. बट ये छोटी सी like first aid is taught in the same way. If you can take this message of an alternative medicine, alternative therapy, that sense of bewilderment will not be there among the teachers, especially. They are not going to panic in a situation of crisis. At least the first step they can take, the first aid, as we call it, real aid, help. Correct. So it's been wonderful getting you here. It's been my wish for a long time, my desire to get you here, and it's been an awesome experience learning from you, listening to you, imbibing what you said. So I thank her from the bottom of my heart, Chanchal. You have been a lighthouse of knowledge today. Thank you so much, ma'am. So bye bye, friends. Thank you for joining in.